Okay, this batch is completed here, 10 of 2025. Okay, have you got in confidence here? Yes, sir. Good. All the things have been completed here, GTO task, psychology, interview. इस बार का जो psychology है वो सर ने लिया था, ग्रुप कैप्टन AK सिंह. अच्छा रहा आपका? Yes, sir. Good. Now, thing is that after this, you have to practice. You got all the observation here during your SSB training. Okay? Yes, Everybody got the SSB book? Yes, sir. Just go through all the lecture aids, group discussion topics are there. Okay? Yes. Just very important points for the SSB. 2-3 things, remember. Get your documents ready in all respect. Okay? All documents will be verified there. Or all the original documents has to be kept properly. Your uniform, your hair cutting, your turnouts, and be in time your SSB center. Whenever you get the instruction for the SSB, just go through the complete information given in your mail. उसको आपको देखना है बेटा, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अपना करंट अफेयर अपडेट रखिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैज टू बी अपडेटेड रेगुलर बेसिस. इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि इसके बाद जाने के बाद बस सो जाओगे. नो, रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह और शाम एक्सरसाइज करनी है. आपको जो यहाँ पर पढ़ाया गया है, जो प्रैक्टिस कराई गई है, उसकी आप जाने से पहले रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करिए. जो भी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस फॉर द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, you should know the complete information about the three forces. यानी आपको जैसे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, what's happening, what is the latest technology, what is the latest aircraft carrier, what is the weapons, missiles in armed forces. Okay? Complete Southern Command, Eastern Command, Western Command, the complete information and latest information about the three armed forces. There will be some questions during your interview. Okay? Yes, sir. And be natural during the interview. They are the psychologists. They will judge you. Just be confident. Your body language, your face should be smiling face, and sit there with confidence. Okay, gentlemen? Yes, sir. These are the things. Just remember and be in touch with Doon Defence Academy for any type of assistance in near future. If you feel that if you want any information about the GTO, psychology, interview, YR, stage 1, anything, you all feel free to contact Doon Defence Academy and you can come here for some time for the practice. This practice will be given by the defense expert here. Okay, gentlemen? Yes, sir. And after some time, director sir will be coming here to address you. By the meantime, you be seated. Okay, gentlemen? Yes, sir. And all the best for good luck for your SSB. Thank you, sir. Okay? Yes, sir. All the Joes now? Hi, sir. All the Joes? Hi, sir. All the best. Thank you, sir. Yeah, good morning. Yes, sir. How is everything? Fine, sir. All are ready? Yes, sir. All doubt clear? Yes, sir. Okay. So I'll not take much time. I know you are busy. But before going to SSB or like different SSB में आप लोग जा रहे हैं, I just want to tell one thing. SSB boards are made for selection, not for rejection. Isn't it? Yes, sir. सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं ना वो, Yes, sir. रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं. लेकिन सेलेक्ट उसी को करेंगे जिसमें वो उनको OLQs देखेंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिसके लिए वो 15 OLQs हैं वो चेक करते हैं, वो जिसमें वो देखेंगे उनको वो सेलेक्ट करेंगे. सो यू हैव टू बी ओरिजिनल. आपका टर्न आउट शुड बी परफेक्ट. हेयर कट, जो बेसिक चीज़ें वो आपको बताई दिया होगा, वो बहुत मैटर करता है. और ट्राई करो कि स्क्रीन इन होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डे स्क्रीन इन नहीं हुए तो सारी कहानी ख़त्म है ना. जितना भी टैलेंट हो वो कैसे पता चलेगा जब आप स्क्रीन इन नहीं होंगे. तो उस पर फोकस करना है आपको. पहला टारगेट यही है. बाकी उसको जितने भी 4-5 डेज़ का आपका रहेगा इसको इंजॉय करना है. और चेहरे पे किसी भी टाइम किसी वक्त टेंशन नहीं दिखनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव. टेंशन नहीं दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ये कैसे करूँगा, है ना. वो सब ऑब्जर्व होता है, आपको मालूम नहीं है. हर एक चीज़ हर एक को नहीं मालूम होती. नोबडी इज़ परफेक्ट, उनको भी मालूम. बिकॉज आफ्टर सिलेक्शन आपकी ट्रेनिंग होनी है, तो उनको उतना चाहिए कि जो ट्रेनिंग में आप अगर जा सके तो आप उसको अडेप्ट कर सकें और अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें. तो दे डोंट वांट कि परफेक्ट बंदे चाहिए, उनको ऐसा नहीं. बट यस, उनको वो चाहिए जो आगे जो डिफ़िकल्टीज़ है मिलिट्री लाइफ की उसको कर सके, वही देखेंगे.
मैं आप आपको एक एक प्लास्टिक का फूल दूंगा, इस उम्मीद के साथ जब आप सिलेक्शन लेंगे, फाइनल रिकमेंड होंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो ये मुझे रिटर्न करेंगे एक ओरिजिनल बुके के रूप में। ये मेरा आप पे एक तरह से लोन रहेगा, टी वाई लोन। इसको अपने पास रखना एज ए माई ब्लेसिंग। जो भी रिकमेंड होके आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, बुके लेके वापस आना है आपको, और 10,000 का कैश बांध लेना है। तो रहेगा याद ये? Yes, sir. एक एक करके यहाँ पे आएंगे। यू हैव टू जस्ट टेल योर नेम और आप कहाँ से हैं, कौन से प्लेस से। बस दो चीज़ें आपको नाम बताना यू हैव टू टेल योर नेम और किस प्लेस से हैं आप। My name is Nisha Barpal and I am from Kotdwar, Uttarakhand. And I am going to SSB for CDSE. CDSE के लिए। निशा, यू आर फ्रॉम कोटद्वार। Yes, sir. ऑल द बेस्ट निशा। Thank you. अरे बेटा My name is Dipanshu Swami. I am from Jaipur, Rajasthan. My entry is MD. दीपांशु, ऑल द बेस्ट दीपांशु। गुड लक। My name is Tosha Ganj. I am from Lakhimpur, Uttar Pradesh, and my entry is NDA. ऑल द बेस्ट, गुड लक। Good morning everyone. My name is Kamlesh Chaube. I am from Nainital, Uttarakhand. Go for NDA. Yes sir. ऑल द बेस्ट कमलेश। Thank you sir. My name is Mohit Singh Kushari. I am from Udaipur, Uttarakhand. And I am here for NDA entry. ऑल द बेस्ट मोहित। Good morning everyone. My name is Rishabh Banyal. I am from Hamirpur, Himachal Pradesh and I am going for an NDA entry. ऑल द बेस्ट। Thank you sir. Good morning everyone. My name is Shubham Pandya from Visakhapatnam. I am Dairy Tech. फ्रॉम विशाखापट्टनम। व्हिच पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम? Srinagar. श्री Srinagar. Srinagar. अच्छा। Rajyota. When I was in Navy, I stayed around 7 years in Visakhapatnam. Sir, my father Sushant Kumar. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, गुड लक गुड लक। हाँ ये वही Hello everyone. My name is Akash Kumar. I belong to Patna, Bihar and I have CDSE entry. यू फ्रॉम पटना। Yes sir. ऑल द बेस्ट। Thank you sir. Okay, we got the students, those have cleared the NDA 1, CDS 1, FCAT 1. As per tradition of Doon Defence Academy, today in this session, they will get the cash award of 1,000 rupees. Okay? Now the first name is FCAT 1, Tanya Chaudhary. Just cleared the FCAT 1. तालियां बजाओगी? I am from Uttarakhand. मसूरी से? Yes. ओके। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Next one is CDS 1, Aman Singh Mehra. Cleared the CDS 1 exam. And followed by FCAT 1 exam. ओह गुड। ऑल द बेस्ट। Next student, NDA 1 cleared Sumit Kumar Singh. ऑल द बेस्ट सुमित। Thank you, sir. NDA 1 Mayank Yadav. ऑल द बेस्ट माइंड सर। Okay, NDA 1 Kunal. ऑल द बेस्ट कुणाल। Thank you, sir. NDA 1 cleared exam Ankit Chaudhary. ऑल द बेस्ट अंकित। Thank you, sir. NDA 1 exam cleared Aditya. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। NDA 1 cleared exam NDA Foundation Pratham Pak course 1 students Mohit Singh Kushari. ओ मोहित। फाउंडेशन कोर्स का है ना? कौन सा हाउस था तुम्हारा? जल हाउस। ऑल द बेस्ट। चलो सबके लिए ताली बजाओ। 14 जून को अभी एयरफोर्स एकेडमी में पीओपी है। आई एम गोइंग देयर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उस दिन। कोई फाइटर पायलट बन रहा है, कोई ग्राउंड ड्यूटी पे जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो, और आप जब भी आपका पीओपी हो अगर याद करें तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं हमेशा जाता हूँ, चाहे एनडी हो, IMA हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, जो भी स्टूडेंट मुझे इनवाइट करता है मैं पक्का जाता हूँ वहाँ पे। तो भैया उसका याद होगा ना, गौतम का। हमारा एक स्टूडेंट था गौतम, फाउंडेशन कोर्स का। वो कैश अवार्ड नहीं ले पाया था किसी कारण से, मैं उसको वहाँ दे के आया हूँ NDA। तो
चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त अपना जाओ और जीत के आओ। क्या और क्या? ओके, बेसिकली जो मॉक टेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने जो क्वालिफाई किया था, वी गॉट वन स्टूडेंट्स मयंक यादव। ओके, ही गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन एनडीए मॉक टेस्ट एंड फर्दर एनडीए मॉक टेस्ट 2 times. Okay, 3 time mock test number 1 positions. Okay, clapping point. You will getting 1000 cash award for each test. And this is again for 3rd positions, 200 rupees for the mock test. Okay? सारे इसी के हैं क्या? सारे इसी के ही हैं। इसके सारे मेडल इसी के। ये मेडल 1 by 3 तो ये हो गए। ठीक ही है। Great यार। सारे। ये भाई 1 2 आगे जाते रहो उसके लिए। सारे न्यूज़ क्लियर हो गए। ये इसके लिए? ये भी दिखा, ये सेकंड को बोला। 4 और ये देखो। और ये तो सारे कैश अवार्ड। गुड लक। सुमित कुमार सिंह, एनडीए मॉक टेस्ट, 3rd पोजीशन। How the जोश पे SSB? हाय सर। How the जोश पे SSB? हाय सर। लक्ष्य को हरा पाना है। लक्ष्य को हरा पाना है। जय हिंद। जय हिंद। चलो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर। और हेलो वर्दी जिसका सपना देख रहे हो सब लोग, ठीक है ना? इससे अच्छा कुछ नहीं, ठीक है? जय हिंद, मेरा नाम है राहुल और मैं झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ और मैं यहाँ पे SSB के लिए आया था FCAT की। और मुझे ये दून डिफेंस एकेडमी का मेरे दोस्तों से पता चला था, वो भी इसका अच्छा फीडबैक दे रहे थे। और यहाँ पे सर जैसे कि GTO है, साइकोलॉजिस्ट की क्लासेस होती हैं और OIR की क्लासेस होती है, तो सभी बहुत बढ़िया है। GTO बहुत अच्छे से यहीं पे ग्राउंड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। और OIR तो रीजनिंग है, तो FCAT में रीजनिंग आती है, तो वो अच्छी तैयार थी, मतलब यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। और मैं तो यही कहूँगा कि दून डिफेंस एकेडमी में आपको आना चाहिए। थैंक यू। My name is Mohit. I am from Jhunjhunu, Rajasthan. My friends have taught me about Doon Defence Academy and I come here for SSB NDA entry. The faculty is fantastic. The maths teacher, the reasoning teacher and the psycho teacher, interviewing officer, all the teachers are just fantastic, and the knowledge they give to me and they taught me about my weaknesses. Overall my review is excellent to Doon Defence Academy, and I will see that every student must come here for SSB and NDA CDS FCAT entry. My name is Toshagansh and I belong from Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, and I joined this SSB program for my NDA tech entry. And before, when I joined this program, it was like my confidence level was not that much as I was expecting to go for the SSB coaching. And so when I joined this program, I was like, yeah, I need to earn the confidence, I need to get that level to crack the NDA exam and get screen in and get confidence in, and then get that uniform and join the National Defence Academy. To get there, to get that confidence, to get that level which I want. I think Doon Defence Academy provided the much needed way or like a coaching, so that one could sharpen his skills, one could increase his level, and so all the tasks, all the things which were done like SSB interview, the interview guidance was good. And the GTO, I would say that it was best. All the tasks, all the approaches, it was good by our GTO. And then moving on to the psychology part, it was also good. The best, I would say, key psychology was, as the program, the coaching which was done by our sir. He was like a very good motivator, a good guider, and it was like good with him, good experience with him. Then also GTO was also good. It was very nice to be with him, and also interview part was also good, and all the basic facilities here which we got were also good. The food, the hostel, it was also good. So my experience here, I would say it was good, yeah, and so that's why. Jai Hind. My name is Nisha Bartwal and I am from Kotdwar, Uttarakhand.
When I first came to DDA, I was preparing for written exam. I have taken some 6 months of preparatory classes and I cleared my exam. After that, I came here for SSB classes. When the first day I came here, it was like I was on the negative level. My confidence level was too low and I didn't know anything about what to do. But after taking 15 days of classes, teachers motivated me a lot. They told me what my mistakes were, where I was lacking, and prepared me like we can do it. Now I know where my mistakes lies, and now after all these days I know that I am improving and I'll keep improving. Thank you so much. My name is Dipanshu Swami. I am from Jaipur, Rajasthan. I had come here for SSB preparation and I have batch. I am leaving this batch and the experience was so good, so I am suggesting the other candidates who wants to come here, have a batch and increase your knowledge and take experience of mock interviews. Hello everyone, my name is Akash Kumar and I belong to Bihar state. Currently I live in Patna and recently I have joined DDA SSB classes and I found it very well. It helped me a lot, especially the G2 expert have helped me a lot to improve myself, and all other expertise like psych teacher, OIR teacher and other teacher also helped a lot me to improve myself, and by attending the classes here I am very much confident. I will in SSB I will perform very well. Thank you. Jai Hind. Good morning everyone. My name is Rishabh Banyal and I am from Himachal Pradesh, Hamirpur. When I first joined DDA, I enrolled here for the SSB crash course. It really helped me to build up my confidence and know a lot about SSB. The faculty here is very motivating and helped me to know more about SSB. So I recommend this institute to all the other candidates who are looking to go forward to SSB. So thank you and Jai Hind. Good morning everyone. My name is Shubham and I am from Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and my SSB experience was very good and I had a very casual attitude towards SSB, but now my perspective has changed and I recommend everyone and every student who is coming here for SSB coaching to take a very constructive approach and be confident about SSB. Thank you and Jai Hind. Hello, myself Shivam. I am from Hisar, Haryana. I came here in DDA for my SSB crash course best. It was quite a good experience. If I say about psych classes, OIR classes and GTO classes, all professors helped me, all teachers helped me to find out my weaknesses. I will surely work on it. Jai Hind. Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.